लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है जयशंकर रूबियो मीट्स अमिड द ट्रेड वीज़ा टेंशंस। मैं अगर इस मीटिंग के कंटेक्स्ट के बारे में बात करूं तो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर मेट यूएस सेनेटर मार्को रूबियो इन न्यूयॉर्क अमिड द ट्रेड एंड वीज़ा रिलेटेड टेंशंस। बेसिकली ये जो मीटिंग है दैट हैज़ अकर्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली with India-US ties facing strain due to tariffs and H-1B visa. क्योंकि अभी रिसेंट में H-1B वीज़ा के भी जो फ़ीस है उसको हाइक कर दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसके अलावा ट्रेड इश्यूज़ भी हैं जिसके बारे में कुछ डिस्कशंस करने हैं, लाइक US tariff on Indian goods and India's retaliatory tariffs on American products have caused the friction. वीज़ा कंसर्न्स भी हैं जहाँ पर US has moved the limit of H-1B visas to around $100K. Visas has been a major cause of concern for Indian IT professionals and companies. Discussions points क्या हैं? Talks have covered the bilateral relations, global cooperation and regional issues including Indo-Pacific security. Emphasis was placed on the Quad alliance, India, US, Japan, Australia for regional stability, and both the leaders avoided public controversy, highlighting cooperation. Instead, Jaishankar and Rubio posed together, signaling cordiality despite the underlying disputes. Next topic है आपका the growing relevance of traditional medicine. Basically, they are talking about the WHO recognition, global trends, market growth, etc. So the World Health Organization has acknowledged traditional medicinal role in global health, highlighting its importance in treatment and prevention both. Over 170 members of the states report use traditional medicine. WHO supports integrating safe practices into the healthcare system. मार्केट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो द ग्लोबल हर्बल मेडिसिन मार्केट वॉज वैल्यूड अराउंड एट $657 billion in 2020 and is projected to reach $1.2 trillion by 2030. So India with Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, that is Ayush, is a major contributor. Ayush sector grew from $3 billion to around $18.1 billion in 2020. What is the industry strength which they are talking about? So India has around 9,000 Ayush manufacturing units, 1,500 teaching institutes and experts herbal products to over 100 countries. So research and collaboration की भी बात की है इसमें, where WHO has established its global centers for traditional medicine in India around in 2022 to promote evidence-based practices. So basically ये जो है this is traditional medicine versus the allopathy medicine, modern medicine. So इस पे आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को पुश किया है। इंडिया प्रमोट्स आयुष थ्रू द पॉलिसी सपोर्ट, इंटीग्रेशन विथ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड ग्लोबल आउटरीच। फ्यूचर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन इफ़ सिग्निफिकेंटली वायलेटेड एंड यूज्ड कैन कॉम्प्लीमेंट मॉडर्न हेल्थ केयर एंड इम्प्रूव ग्लोबल वेलबींग सस्टेनेबली। नेक्स्ट है आपका कॉन्ड्रम, हाउसहोल्ड स्पेंडिंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी बट इट नीड्स अ जंप स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर कंजम्पशन एंड ग्रोथ की बात हो रही है, वेयर हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स drive the economy. Of these, only government spending has grown strongly. दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई है, वेयर देयर इज़ अ नीड टू राइज टू सस्टेन 8% plus growth. Industrial capacity stuck below 80% since 2011. If we talk about exports, weak due to global slowdown, US tariffs and declining external demand. Boosting consumption two ways: increase incomes, lower prices. GST cuts was expanded around September 22. Lower tax coverage
to 75% of the monthly spend. So इनकम टैक्स कट्स की अगर हम बात करें तो बजट 2025 स्टेप वेलकम्ड बट इनएडिक्वेट. What are the challenges? Wage stagnation, labor oversupply and skill gaps. ये challenges हैं. So there is a more fiscal push to jump start the demand. Next आपका topic है basic structure. So there can be no restriction in a public event on the basis of religion. Supreme Court has recently reaffirmed that secularism is a fundamental principle and the part of basic structure of the Constitution of India. While this is a welcome restatement, it is concerning that the court has to periodically reiterate the foundational aspect of Indian nationhood. The need arose from a misguided petition that sought to communalize a moment of celebration for all Indians. The Karnataka government had invited International Booker Prize winner Banu Mustaq, who is a Kannada writer and who is Muslim also, to inaugurate the Mysuru Dasara festival at the Chamundeshwari temple, which she did on Monday. So this festival is a state sponsored cultural event that is not purely religious, serves as an occasion for all communities to come together and share in the joy of the festival. So the petition filed at the court alleged that Ms. Mustaq's participation violated Article 25 and 26 of the Constitution, which guaranteed freedom of religion. So basically in this case, a bench of justices Vikram Nath and Sandeep Mehta, उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया, saying it that it is a secular right and secularism prevails in India. So they clarified that Dasara festival is a state event and not a private religious ceremony. So the court emphasized that the state cannot discriminate based on the religion when organizing public events and questioned whether the petitioner had even read the Constitution's preamble or not, which unambiguously promotes the equality and secularism. So this is a very important thing which I am saying, मतलब जो मैं इस टॉपिक के बारे में बोल रही हूँ, this is very important. So the Karnataka High Court had previously upheld the government's decision, stating that the person of one faith participating in the events of another does not violate anyone's constitutional right, and that's right also. So the constitutional right to practice and profess religion cannot be interpreted as a right to restrict others from participating in a faith's practice. Now this is a very important point. Restricting participation in any public gathering based on religion is indefensible in a pluralistic state. Although some places of worship still limit access to certain groups, such practices remain a source of legal and ethical debate. So those who perceive a threat to their religion from someone who is voluntarily and happily joining its festivities are either cynical or cunning. So in fact, over many centuries and across the different geographies, festivals and pilgrimages have united India's diverse population, often transcending social barriers. So the acceptance of this shared mixed culture heritage is a common thread among all Indian political parties, even amid their disagreements. However, a new group of political opportunities is exploiting this harmony by creating the communal rifts. So this is important with respect to Indian polity, और कहीं ना कहीं conceptual basis पे भी important. And also this point holds a very important significance, क्योंकि मैंने आपको बताया कि this cannot be interpreted as a right to restrict others from participating into the religious affairs or is hurting someone's faith or interest. Next topic है आपका H1B new $100K entry cost, why young Indians are most at the risk. So basically कहीं ना कहीं ये जेंडर बेस्ड एनालिसिस है और क्यों इंडियन वुमेन जो हैं दे आर मोस्टली एट द रिस्क. सो वी नो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि यूएस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था
to hike the entry cost of H-1B visa to around $100K as an application fee. So major implications for Indian IT workers, like India has around 74% of the H-1B approvals in the financial year 2024. Key facts can distribution, initial employment approvals 37%, जिसमें 37% फीमेल होती हैं एंड 63% मेल होते हैं. कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल्स 26% फीमेल, 74% मेल होते हैं. एंड सैलरी डेटा के हिसाब से बॉटम क्वार्टाइल $77,000 है, मीडियन क्वार्टाइल है अराउंड $95,000 एंड टॉप क्वार्टाइल है $132,000 क्वार्टाइल. सो फीमेल का मीडियन कहाँ से रेंज करता है? इट इज़ अराउंड $91,000 वर्सेस द मेल मीडियन that is around $99,000. So cost burden $100K fee is around 11 to 13% of the annual income for bottom quartile workers. Impact groups में सबसे ज़्यादा women पे आएगा, younger entrants पे आएगा and Indian workers पे आएगा सबसे ज़्यादा impact. Implications क्या पड़ेंगे? Equity issue रहेगा, women face higher entry barriers despite rising educational qualifications. इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा. दिस में डिफर एंड डिटर US फर्म्स फ्रॉम स्पॉन्सरिंग फ्रेश इंडियन टैलेंट. ब्रेन ड्रेन रिस्क भी है. इंडियाज़ स्किल्ड यूथ स्पेशली विमेन में लूज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़. जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस ऑल्सो दिस कुड अफेक्ट इंडिया US टेक्निकल और स्किल पार्टनरशिप. So this is somewhere important with respect to India-US relations in context of international relations. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाई इज़ इंडिया नॉट इम्पोर्टिंग कॉर्न फ्रॉम द US. इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज़ अबाउट ऑन गोइंग इंडिया US ट्रेड टॉक्स इंक्लूड US पुश फॉर कॉर्न एक्सपोर्ट्स टू इंडिया. इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड साइटिंग GM क्रॉप्स कंसर्न्स एंड डोमेस्टिक पॉलिसी प्रायोरिटीज़. अगर हम कॉर्न इन इंडिया की बात करें तो इंडिया इम्पोर्ट्स कॉर्न मेनली फॉर पोल्ट्री फीड एंड इंडस्ट्रियल यूज़. Important sources क्या हैं? म्यांमार, यूक्रेन, ब्राज़ील, that they have basically non-GM crops, genetically modified crops. So इनके जो crops होते हैं genetically modified नहीं होते हैं. US कौन सा largely genetically modified. So India bans GM food crops cultivation. Importing GM corn regulatory, political and consumer resistance को भी face कर सकता है अगर हम अलाउ कर देते हैं तो GM क्रॉप को. US push for corn exports. US Midwest region is hub for GM corn and soybean production. Backbone of animal feed industry. Corn है. So corn is basically the backbone of animal feed industry. This is supported by strong farm lobbies, subsidies and ethanol blending programs. US trade diplomacy often links agricultural to larger trade deals. Political stakes की अगर हम बात करें, US corn exports tied to farm lobby pressure and domestic politics. China reduced soybean imports from US, shifting focus on India. And American farm sector critical for US presidential elections pushes the market access. So what is India's stance? इंडिया ने बेसिकली बैन कर रखा है GM क्रॉप कल्टिवेशन को. सो दिस इज़ अ बैरियर टू US कॉर्न. इंडियाज़ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंक्रीजेज मेज डिमांडिंग डोमेस्टिकली. इम्पोर्टिंग US GM क्रॉप कॉर्न वुड undermine the local maize farmers, clash with India's food safety rules and threaten the self-sufficiency goals. So instead, India strengthens domestic corn production ecosystem. So basically इसका जो relevance है, this is with respect to agriculture and genetically modified crops. क्यों? अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंस होल्ड करता है कि क्यों इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करता है. इस चीज़ के बारे में आपको ढूंढना है. जो लार्जली हाईली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको क्यों नहीं फेवर करता है. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉर्न सेक्टर. कॉर्न सेक्टर की बात नहीं हो रही है. US में लार्ज स्केल पे बहुत से क्रॉप्स जो हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है. इंडिया में ये चीज़ें बहुत लिमिटेड स्फीयर में हैं ताकि इकोलॉजी भी डिस्टर्ब ना हो.
तो इस चीज़ को आपको देखना है कि क्या रीज़न है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट जज सेज इट्स हाई टाइम डिफेमेशन वाज decriminalized. So Supreme Court Judge Justice Sanjeev Khanna stated that it is the time to reconsider criminal defamation in India as it no longer serves the public interest and undermines the free speech. He noted that defamation, a private wrong, should not interact criminal liability but be dealt with under civil law. So his remarks came while hearing a petition questioning the constitutional validity of sections 499 to 500 IPC, which criminalize the defamation. The judge emphasizes that increasing use of criminal defamation curtails democratic rights and suggested India to follow global trends of decriminalizing it. So, balancing reputation protection with freedom of expression under Article 19, Clause 1, Subclause A is crucial for India. So, he is just recommending some changes with respect to the defamation charges जो भी लगते हैं under the IPCs. तो इस कंटेक्स्ट में आपको भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आंसर जो है लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग स्लाइट रिडक्शन CPCB. सो द नंबर ऑफ लोकेशंस इन इंडियन रिवर्स विच आर अनफिट टू बेथ सॉ एन इंक्रीमेंटल डिप to around 807 in 2023 from 815 in 2022, according to the report by Central Pollution Control Board that made public on Monday. There was, however, a reduction in the number of river location considers most which were considered most polluted. So the agency monitors and compiles data in 2-year phases of river health, specifically measuring the parameter called the biological oxygen demand. Now this is a very important term, biological oxygen demand. मैं वैसे तो ये कवर नहीं करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि इसमें ये टर्म आ गया है, ये इकोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अ BOD दैट इज़ ग्रेटर देन 3 मिलीग्राम indicates rising pollution and is considered unfit for bathing. 2 continuous locations exceeding the criterion in a single river is counted as a polluted river stretch, that is PRS. So ये जो key terms है BOD and PRS, this is important, और इस पे आप notes बना लीजिएगा क्योंकि BOD is somewhere related to ecological aspect also, ecological and environmental aspect of the river. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स ऑफ लाइट बेस्ड कंप्यूटर्स को चेंज द वे AI वर्क्स। अब ये जो है दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ, सो देर आर सम डिस्कशंस विद रिस्पेक्ट टू करंट लिमिटेशंस। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग which face speed and energy constraints. Alternative approach की अगर मैं बात करूँ, researchers are exploring light-based optical computing using the photons instead of electrons for faster, energy-efficient computing. New findings की अगर हम बात करें, teams from Tampere University and University Melbourne have studied the non-linear interactions of light pulses in optical fibers, revealing new computational potential. Method क्या है? Encode input data into light pulses, non-linear fiber interactions, transform data into complex patterns, used as an extreme learning machine ELM model to classify the images. What are the advantages of it? Higher speed due to light's velocity, lower energy consumption than electronic circuits, ability to process AI tasks with fewer resources. What are the applications? This could be used in super fast internet services, real-time AI learning, and areas that needed rapid, efficient computing. Future potential के बारे में अगर हम बात करें तो this may revolutionize AI models, making current approaches seem primitive if scaled successfully. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.